Hi, welcome back again. This is Sam. Now, in this video lecture, we are going to do some basic tips about improving your conditional clauses, right? Many children are facing difficulty in terms of speaking as well as writing if conditional as well as when. No doubt, unless until. So I will be covering these four only. There are other conditional sentences also, but in this lecture, I'll be covering them. Try to make it as simple as possible, and believe me, you won't commit any mistake. There are two types of conditional clauses. We can use either in past or in future, definitely not in present, right? So I will be covering today only in the future portion, right? And see how you understand. And I'll be making it breaking down in very simple format. Okay, I won't be going by the rules like here use present perfect or blah blah blah. Now if you are enhancing your communication skills for daily purposes, right, you don't need to get much into grammar, like knowing the rules and everything. I mean, you need to understand the basic concept of it, right? Now, before kicking start with our today's thing element, now I would like to share something. See, why I always say, many students, when I'm giving them my spoken sessions, and also they say that, how did you improve your English? I mean, how you can communicate so effectively, right? I first of all say that never, compare yourself with me. I don't deny this fact that I speak good English, but I won't even consider myself that I'm perfect. Okay. Now I have spent around 11 years in Australia, right? I have traveled a lot. Now it doesn't mean that I have actually taken, classes over there to do English. I spoke daily, right? There's one thing that I found in native speakers, right? That they are not someone who would be, taking out your mistakes, right? When you are going overseas or when they come India, like, I mean, you just should communicate with them irrespective of whatever communication you're doing with them, like, whatever words you're using with them, they would still understand and they would always appreciate you, right? That, oh, thank you, cheers, mate, thank you so much, right? So they would always do that, right? Because it's not that something that you should feel bad about it, right? They know that you were not born in, like their land where you could also speak English. Now, as you can see, also you might be having some friends of your relatives who are living overseas, right? When they come to India, you're always mesmerized with the way their accent is, the way they're talking. So you straight away start judging them to, right? Oh, don't try to speak that English. Okay, you have come from my country only, right? You were little child. Okay, when I used to do your clean up your potties and all. Okay, so never do that, right? The thing is that they have improved because they are living in that environment where they are listening that kind of tone, and they obviously will be having on their tongue because they are practicing that. Not practicing, I would say the correct word would be they're speaking daily using those kind of tones that they are listening. So if you want to become, the same, now whatever students have gone overseas, do you think they took grammar classes? Right, they never did. Okay, so what I'm trying to tell you is that you need to speak daily. You need to understand the basic things of grammar rather than running too much about the rules and regulations of grammar. There are numerous rules you cannot understand by heart, right? I never did, honestly. I understood only the basic things. I speak English. I know my words are correct, right? So this is how I have come up with some grammar tips and all, because students, they do ask me that how can you convince us that whatever sentences you are speaking and all, are these correct or not? So how can you speak so well? So I thought of that let's come up with some kind of, like vocabulary, or let's come up with some kind of a strategy, a simple, breaking down to a simple strategy. That way I can tell you that how you can understand while you're translating or anything like that. Okay. The main flaw that I realized that in our own vernacular also, because we have been listening from many times some wrong sentences even in Hindi. That's my vernacular, right? So vernacular, my native language. So I have been listening to wrong sentences in Hindi also. That is why I am changing it in English and speaking. Okay, very simple example. आपका शुभ नाम क्या है?
right? This is wrong. How can a name be shubh or bura? Okay, name cannot be categorized into good or bad. Name is just the name because that is your personal pronoun, right? So what is your name? This is all correct. What is your name? You cannot say what is your good name. Okay, let's begin now. If का होता है अगर, ठीक है, कंडीशन। इफ सेंटेंसेस को समझने के लिए यहां पे मुझे अब हिंदी थोड़ा बोलना पड़ेगा, ठीक है। इफ सेंटेंसेस को करने के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि इफ में आपके पास दो क्लॉजेस होते हैं। यहां पर आपका कॉमा लग सकता है या आपका देन। ओके, ये है आपका फर्स्ट क्लॉज, ये है आपका सेकंड क्लॉज। ये आपको जोड़ता है इफ, ये आप यूज करोगे व्हेन। ये अनलेस और अनटिल बाद में करते हैं, ठीक है। तो इफ व्हेन, अब इसमें फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज वो कैसा है, ये आपकी है कंडीशन, ये आपका निकल रहा है परिणाम यानी रिजल्ट। सो विच मीन्स, अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो कैसे आएगा, अगर आपकी कंडीशन फुलफिल होगी तभी रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन फुलफिल होगी तभी रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। अब कंडीशन फुलफिल होगी, सो अगर ये है तो इफ के साथ, अब इसमें देखो हमने मॉडल वर्ब का यूज करना है। मॉडल्स आपको पता होंगे, ठीक है। उसमें आता है आपका मे, माइट, कुड, कैन, वुड, विल, राइट। सो ऑब्वियसली उसमें हमारा शैल और शुड भी आ जाता है, ये सजेशन के लिए हम इनके साथ खेलेंगे। अब ये आपके हो गए तीनों वीक, ये आपके तीनों हो गए स्ट्रॉन्ग, ये भाई साहब हो गए आपकी रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है, सजेशन। चलो, अगर आपकी कंडीशन फुलफिल होगी तभी रिजल्ट निकलेगा, राइट। सो इसको दो तरीके से लिखा जाता है, या तो आप रिजल्ट पहले ले आओ, सेकंड क्लॉज, आप रिजल्ट पहले ले आओ, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि रिजल्ट पहले ले आए आप, ठीक है, तो आपको क्या आएगा, यहां पर आपका इफ आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्योंकि इफ के साथ जो क्लॉज है वो कंडीशन ही लगेगी, यहां पे आपकी कंडीशन आ जाएगी। इस तरीके से भी हम साउंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, सॉरी, आई एम अनएबल टू राइट हिंदी, तो मैं बोल देता हूं। जैसे अब हमारे पास सेंटेंस आता है कि अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तभी आप एग्जाम में पास होगे, तभी आप एग्जाम में पास होगे, अगर आप मेहनत करोगे तभी आप एग्जाम में पास होगे। इफ यू वर्क हार्ड, ये कंडीशन आपकी आ गई। चलो स्पीकिंग में चलते हैं, तो हम देन यूज करते हैं यहां पे। देन इफ यू वर्क हार्ड देन ओनली you will be able to pass your exam, ओके। इफ यू वर्क हार्ड, अब यहां पर क्या रहता है, काफी बच्चे क्या करते हैं, यहां पे मॉडल वर्ब लगा देते हैं, इफ यू विल वर्क हार्ड, ठीक है, इफ यू विल वर्क हार्ड। एक चीज बस ध्यान में रखो, इफ के साथ जो सेंटेंस आपका आएगा, इफ के साथ कंडीशन वाला सेंटेंस, उसके अंदर कभी भी मॉडल वर्ब नहीं यूज करना आपने। कोई आपका मे, माइट, कुड, कैन, वुड, विल कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ हम यूज करते हैं रिजल्ट देने के लिए। सो अब देख रहे हो, इफ यू वर्क हार्ड देन ओनली यू विल बी एबल टू पास, तभी आप पास होने के काबिल हो गए, ठीक है। और सेंटेंस बनाते हैं। इफ यू वेक अप अर्ली, ठीक है, इफ यू वेक अप अर्ली देन
we will go to the market. यहां पे अब we will go, we can go दोनों लगा सकते हो। अब वो कैसे है? विल होगी आपकी श्योरिटी, ठीक है, तकरीबन 97 98 तकरीबन आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है, राइट। सो विल होगी आपकी श्योरिटी। इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा प्रोबेबिलिटीज कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो इफ यू वेक अप अर्ली, अगर आप जल्दी उठोगे, इफ यू वेक अप अर्ली, अगर आप जल्दी उठोगे, देन वी विल गो टू द मार्केट, तब हम मार्केट जरूर जाएंगे, ठीक है, मार्केट जरूर जाएंगे, योगी श्योरिटी, हम जाएंगे, ठीक है। यहां पे क्या है 80%, वी कैन, हाँ हम जा सकते हैं मार्केट, वी कैन गो टू द मार्केट। अगर आप जल्दी उठोगे तो हम मार्केट जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं, वी कैन गो टू द मार्केट, जाएंगे, वी विल गो टू द मार्केट, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस। इफ यू, अब आप देख रहे हो कि यहां पे कोई भी, ये आपका फर्स्ट क्लॉज है, इफ के साथ लग के, कोई इसमें मॉडल वर्ब नहीं है, ठीक है। सो इफ यू वेक अप अर्ली देन वी कैन गो टू द मार्केट। अब इसी सेंटेंस को अगर हम रिवर्स लिखते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि सेकंड क्लॉज पहले ले आओ, बीच में इफ ले आओ, चलो, वी कैन गो टू द मार्केट if you wake up early, कोई कॉमन नहीं, कोई कुछ नहीं, राइट। सो सेंटेंस को बोलने को देखो कैसे साउंड हो रहा है। अब यहां पे साउंड आ रही है इसकी, इफ यू वेक अप अर्ली देन वी कैन गो टू द मार्केट, इफ यू वेक अप अर्ली देन वी कैन गो टू द मार्केट, वही चीज यहां पे, वी कैन गो टू द मार्केट इफ यू वेक अप अर्ली, ठीक है। ये जो बोलने का तरीका आ गया, ये आपका रिमेंबर जब आप स्पीकिंग भी कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो डेली कम्युनिकेशन है या वो आईएलटीएस में है, पीटीई में, एनीवेयर, व्हाई द साउंड ऑफ इफ सेंटेंस, हाउ वी कैन यूज व्हेन यू आर यूजिंग इट ऑन हियर, वी कैन गो टू द मार्केट इफ यू वेक अप अर्ली, इफ यू वेक अप मतलब कंडीशन अगर, ठीक है, इफ यू वेक अप अर्ली, right? So if you wake up early we can go to the market, if you wake up early we will go to the market, right? So this is how we use if. एक और सेंटेंस, if you come to work daily on time then I will not deduct any amount from your wages. If you come to work daily on time, then I will not deduct any amount from your wages. You can also see here, then, after we're using. If you come to work daily, any modal verb? Nothing. Because this is the condition. अगर ये आप कंडीशन फुलफिल करोगे तो ये चीज होगी, ठीक है। यानी अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो ये कंडीशन, ये जो आपका रिजल्ट है ये भी नहीं होगा। तो यानी अगर इसको इस सेंटेंस में बोले कि आई विल एवरी डे डिडक्ट मनी फ्रॉम योर वेजेस, ठीक है, आई विल डिडक्ट एवरी डे मनी फ्रॉम योर वेजेस, ठीक है, इफ यू डू नॉट कम टू वर्क ऑन टाइम। अब इस सेंटेंस को याद रखना क्योंकि हम ये शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ये व्हेन का भी सेम ही है, ठीक है, व्हेन, ठीक है, व्हेन यू कम टू वर्क डेली ऑन टाइम देन आई विल नॉट डिडक्ट एनी अमाउंट फ्रॉम योर वेजेस, ठीक है, दोनों कंडीशनल वैसे चल रहे हैं। अब बात करें अनलेस की। अब इस सेंटेंस को मैं ये यहां पे ये लिख रहा हूं, आई विल नॉट डिडक्ट एनी अमाउंट फ्रॉम your wages, I will not deduct any amount from your wages if you, I will not, okay,
let's use unless here. Now, if not, I will deduct some amount. I will deduct some amount from your wages if you do not come on time daily. मैं पैसे काटूंगा. I will deduct some amount from your wages if you do not come on time daily. अगर तुम डेली टाइम पर नहीं आते. ये सेंटेंस मैं अभी लिख के छोड़ रहा हूं. अब आप देख सकते हो उसके कंडीशन की कैसे फुलफिल हो रही है. अगर आप काम पर डेली नहीं आते तो मैं आप पैसे काटूंगा. करेक्ट. यूज ऑफ अनलेस. अनलेस और अनटिल में फर्क ये रहता है. अनलेस हम यूज करते हैं जब हमने इस चीज को रिप्लेस करना है. इफ नॉट को इसको रिप्लेस करना है. क्यों? क्योंकि अनलेस में स्टूडेंट्स मेरे काफी हंसते हैं देखिए इस चीज में, लेकिन मैं आपको इजी बता देता हूं. यहाँ पे ये नन्ना आ गया ना, नन्ना बेसिकली, ठीक है. दिस एन इज फॉर नेगेटिव, सो इट मींस इसमें ऑलरेडी नॉट आ गया आपका. ठीक है. सो नन्ना आ गया. इसकी बजाय आप इन दोनों की बजाय आप सिर्फ अनलेस यूज कर देंगे वहां पर. ठीक है. अंटिल में अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अंटिल हम यूज करते हैं सिर्फ टाइम, जब हम टाइम की बात करेंगे. वो कैसे बताता हूं. अब आई विल डिडक्ट सम अमाउंट फ्रॉम योर वेजेस इफ. अब देखो इसमें क्या क्या काटते हैं हम. इफ यू डू नॉट. अब ये चीज हटा दो आप. इफ डू नॉट, इफ डू नॉट. ठीक है. अगर हम सिर्फ ये चीजें हटा देते हैं तो हम अनलेस यूज कर सकते हैं यहां पर. तो आपके पास सेंटेंस क्या रह जाएगा फिर. आई विल डिडक्ट सम अमाउंट. आई विल डिडक्ट सम अमाउंट फ्रॉम योर वेजेस. अब हमने इफ डू नॉट को हटाना है. यू कम ऑन टाइम डेली ये लिखे रहने देना है. यू कम ऑन टाइम डेली लिखे रहना है. सो आई विल डिडक्ट सम अमाउंट फ्रॉम योर वेजेस अनलेस यू कम ऑन टाइम. बाकी सब सेम रहेगा डेली. ठीक है. कोई कॉमा नहीं, कोई कुछ नहीं. सो आई विल डिडक्ट सम अमाउंट फ्रॉम योर वेजेस अनलेस यू कम ऑन टाइम डेली. अनलेस, ये सेंटेंस जो अनलेस के साथ आएगा ना, ये बड़ा पॉजिटिव वे में साउंड होगा पॉजिटिव वे में, पर इसका मतलब होगा नेगेटिव में. ठीक है. साउंड होगा नेगेटिव में. पॉजिटिव का मतलब अनलेस यू आर हैप्पी. सो इसका मतलब ये नहीं कि आप हैप्पी हो, नहीं. अनलेस यू आर हैप्पी. सो अब मैं इसमें कह रहा हूं इफ यू आर नॉट हैप्पी. ठीक है. इसमें हेल्पिंग वर्ब निकलेगा आपका. ठीक है. इफ नॉट आपका हट जाएगा. सो आई विल डिडक्ट सम अमाउंट फ्रॉम योर वेजेस अनलेस यू कम ऑन टाइम. ओके. ये था आपका अनलेस का यूज. टास्क 2 में जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, द इंफ्रास्ट्रक्चर of cities can never become better unless governments allocate some finance for rebuilding the buildings. चलो ठीक है. So the infrastructure of cities can never become better unless governments allocate some finance for rebuilding the buildings. Now unless गवर्नमेंट्स एलोकेट. अब इसमें देखो आप कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है क्योंकि अनलेस ने बना दिया.
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनलेस को हटाएंगे, इफ गवर्नमेंट्स डू नॉट एलोकेट सम फाइनेंस फॉर रिबिल्डिंग द बिल्डिंग्स। ऑलराइट, आई होप दिस वन इज क्लियर। अनलेस, तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस बनाइए आप, इफ नॉट जिसमें लाकर आप ये चीज नहीं कर पाएंगे जब तक आप ये चीज नहीं करते, उसमें अनलेस डालिए सेंटेंस में। ओके, अनटिल, टाइम की बात जब करें, फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट लीव माई होम until you come back। अब ये टाइम की बात कर दी, यहाँ पे हम अनलेस नहीं लाएंगे, यहाँ पे until लाएंगे, क्योंकि टाइम कि मैं उस समय तक, ठीक है, उस समय तक घर नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम घर पर वापस नहीं आते, जब तक, ठीक है। तो until you come back, वापस नहीं आते, अब यहाँ पे भी नन्ना आ रखा है, राइट। सो until you come back, ठीक है, मैं घर छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम घर वापस नहीं आते। सो आई विल नॉट लीव माई होम until you come back। Okay, so this is how, just make a couple of sentences using unless, until, if, when, right? Do write them. Remember, with if or with unless, until, as you can see, no modal verb, right? With if, with unless, with until, with when, these conditionals, the first sentence there you're going to write with them will never have a modal verb. The second sentence will be having. Okay, all right, I hope this one was fruitful. Thank you so much. If you have any query, please, you can ring us on the number. Thank you.